हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट रैंप फंक्शन और यूनिट रैंप सिग्नल। ओके, तो क्या होता है यूनिट रैंप फंक्शन? यूनिट रैंप फंक्शन इज द फंक्शन विच इज़ डिफाइंड बाय इट्स स्लोप। व्हाट? विच इज़ डिफाइंड बाय इट्स स्लोप, डिफाइंड बाय इट्स स्लोप। ओके, यूनिट रैंप फंक्शन का स्लोप होगा कितना? अगर स्लोप से डिफाइन कर रहे हैं तो इसका स्लोप हमेशा कितना होगा? 1। ओके, व्हेन यूनिट स्टेप फंक्शन is applied to a integrator, or we will say like that, if we integrate the unit step signal then we will get this unit ramp function। मतलब सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, जो यूनिट स्टेप सिग्नल है, ठीक है, ये यूनिट स्टेप सिग्नल है और ये एक आपका क्या है? इंटीग्रेटर है। इंटीग्रेटर मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? आर ऑफ टी। ओके ओके, ऑलवेज प्रोड्यूस द आर ऑफ टी। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? ग्राफिकल फॉर्म में क्या? ग्राफिकल फॉर्म में दिस इज योर आर ऑफ टी सिग्नल, this is your t, this slope is 1 multiply by t, this is 0। okay okay, then मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आर ऑफ टी इज इक्वल टू 1 टू टी फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, एंड 0 for t less than 0, not equal to, only less than 0। what is the slope? Slope is 1, slope is 1। okay, so now this is your unit ramp function or unit ramp signal in signals and system। the main thing is this signal or a function is that this is like y equals to mx in mathematics, y equals to mx। this is what? this is equation of line, ऐसा बोल सकते हैं, बट यहाँ पर c नहीं है। equation of line is what? mx plus c, but this is y equals to mx। how? m equals to y by x, and y is what? r of t, x is what? t, then what is this? slope is 1, r of t upon t is 1। okay, then we will say like this, this is your same as this y equals to mx। what? r of t, r of t is same as y equals to mx। okay, fine। now if we talk about the scaling or shifting, then what will happen? अब मैं अगर इसको शिफ्ट करता हूँ 2 यूनिट, ठीक है, if we talk about the shifting, then r of t minus 2 is where on the x-axis? draw r of t minus 2। okay, r of t minus 2, r of t minus 2 starts from where? at t equals to 2, then its slope is t minus 2। okay okay, now if we talk about the scaling of this ramp signal, then in this scaling part, two types of scaling I have already told you: amplitude scaling and time scaling। first we have studied the time scaling, then amplitude scaling। ओके, याद है ना कि भूल गए? पहले क्या किया? टाइम स्केलिंग किया। तो टाइम स्केलिंग जब किया तो टाइम स्केलिंग में क्या करेंगे?
टाइम स्केलिंग में आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी दिया है आपको, यही है ना भैया, आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी फॉर टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. Okay, if we put t equals to at, then what will happen? R of at is equal to 80 for at is greater than or equal to 0. Then what will happen? Multiply the simple scaling factor to the slope, then you will get the definitely exact drawing of the unit ramp function. Okay, but in amplitude scaling, what will happen? In amplitude scaling of this unit ramp signal, R of at is equal to AR of t, like that. R of 2t is equal to 2R of t. मतलब जो A वाला फैक्टर है एम्पलीट्यूड स्केलिंग वो बाहर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द यूनिट रैम्प सिग्नल एंड we have already talked about the both amplitude scaling and time scaling in the previous lecture. If you face any difficulty in scaling, then you will see the previous lecture. Okay, तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके, बाय बाय, टेक केयर.